Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivaradhari. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई गौरांगो हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधवम जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई निताई गौर गौरांगो हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare. Hare Krishna. So, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So we have been discussing in this chapter, a very special chapter, where Lord Brahma, he is speaking to his son and his disciple Narad Muni about the creative impetus, how this creation takes place, how this material creation takes place. Predominantly, Lord Brahma is talking about this material creation. And we discussed till now that how the Supreme Lord, he is the root cause of this material creation. And Lord Brahma, he is telling Narad Muni, because if you remember, in the previous sessions we discussed, Narad Muni tells Lord Brahma that to me it seems as if you are the supreme controller, you are the supreme, you are controlling everything. But then Lord Brahma says, no, Narad, no, my dear son. Actually, I am not the supreme controller. Even I am created by someone. Because Narad Muni asks that I see that you control everything, but I see that you also worship someone. That means there is someone superior to you also. So Lord Brahma says, yes, the Supreme Lord, Narayan or Vishnu, is superior to me also. And then he says that he has created me. Even I am created by him, along with the whole material creation. We also discussed that how from the body of the Lord, from the body of Krishna, Brahma Jyoti is generated. And that Brahma Jyoti is the source of this material sky, right? Then this material sky, the sense, you can say the sense object which is present in this material sky is sound. Then from material sky, air is generated. And in air, the sense object, there are another sense object develops, which is the touch. So in air, both sound and touch are there. Then from air, fire is generated. And in fire, the third sense object comes, which is form. So sound, touch, and form, they are all three are present in fire. Then from fire, water is generated. And in fire,
the fourth sense object comes up. And what is that? That is taste. So in water, all four are present: sound, touch, form, and taste. And finally, earth is manifested, which contains all the five sense objects, which is Roop, Ras, Gandh, Shabd, and Sparsh. That means sound, touch, form, taste, and smell, odor. So all these five sense objects are present in earth element. And then we discussed that this earth element creates this earth element is actually responsible for this whole creation. These five elements are responsible, and amongst them, earth element is predominant here on earth. Now, today we'll start with text 31, shloka number 31. Taijasat tu vikurvanad indrayani dashabhavan jnana shakti kriya shaktir buddhi pranascha taijasau Shrotram tvagrana drigjihva Vagdor medhrangri payavaha Taijasatu vikurvanad Indrayani dashabhavan Jnana shakti kriya shaktir Buddhi pranascha taijasau Shrotram tvagrana drigjihva Vagdor medhrangri payavaha. Translation. By further transformation of the mode of passion, the sense organs like the ear, skin, nose, eyes, tongue, mouth, hands, genitals, legs, and the outlet for evacuating together with intelligence and the living energy are all generated. Now you see, these are the 10 senses which we have. The five are predominantly, we talk about five only, which includes eyes, ears, nose, tongue, and skin. But, so these are called knowledge acquiring senses or Gyanendriyas. There are five Gyanendriyas, which are also called as knowledge acquiring senses. And there are five Karmendriyas, which are called working senses. Right? So, which are the five? So, in the shloka, Lord Brahma is talking about these five senses as well as the five knowledge acquiring senses, Gyanendriyas, and five Karmendriyas, which is working senses. So Lord Brahma is talking about all three senses. Sorry, all 10 senses. So what is he saying? Taijasat tu vikurvanat. Taijasat means mode of passion, Rajoguna. Indriyani dashabhavan. Vikurvanat means transformation. Transformation of mode of passion. So what does it develop? Indrayani dashabhavan. The 10 senses. Dasha means 10. Dash abhavan. Abhavan means creation, to be created. So these 10 senses are created by the transformation of mode of passion. Jnana shakti kriya shaktir buddhi pranash chattejasau. Jnana shakti kriya shakti. And then what happens? Jnana shakti means the five knowledge acquiring senses through which you obtain jnana or through which you get knowledge. So five knowledge acquiring senses, they develop, which are eyes, ears, nose, tongue, and skin. These are five jnana shakti or jnana indriyas. And then kriya shakti.
Now, these five senses acquire knowledge, but then you need working senses also. So that is called Kriya Shakti. The five working senses. And which are those? So, hands, legs, speech, rectum, and genital. So these are five karmendriyas, working senses. And buddhi pranascha tejasav, and along with them, intelligence and pranavayu, pran, living force, also develops. Shrotram tvaghrana drig jihva. Shrotra means hearing. Tvag घ्राण दृग जिह्वा वागदोर मेढ्रांग्री पायवः. And along with that, here it is, Lord Brahma is talking about the five working senses. They also develop. So now here it is mentioned pranash. That means the living energy, it develops. So what is living energy? You see, it is mentioned that pranavayu, or the force because of which we say that I am living, we say that I am existing in this material creation, or I am a living person, is because of this pranavayu, or this prana. Prana means living energy. Now, what is living energy? Because living energy actually belongs to the soul, Atma. So, the living energy which is spoken about here is the animation, or you can say the combination of all these senses combined together along with the three modes. We all say, no, that I am living. We all say that I can move my hand, I can move my legs, I can move my eyes, ears, everything. From where are we getting that idea that I am living, that I exist? Because body actually is dead. There is no life in the body. Life is there in the soul, Atma. So the soul, because of the action of three modes and time element, they create an impression of life in the body. That's why the soul thinks that I am this body. The three modes and the three modes along with time and these senses, they combine together to create an impression of life in this body. That is what is called life force here, right? Material living force, that is pran. It encircles the soul. This pran is actually, it encircles the soul, because of which the soul thinks that I am this body, and the soul starts to feel that he is living in this material existence. Right? So, now, as we discussed that buddhi pranascha tejaso, intelligence also develops. Lord Brahma is saying that intelligence also develops. Now, what is intelligence? What is the function of intelligence? You see, this is very important. We need to understand it very nicely. So, Atma, or the soul, what is the characteristic of Atma? We, the soul, what is our characteristic? Who are we?
So as we know, all of us know that Krishna is called as Satchidananda Vigraha. He is Sat Chit Ananda. Sat means eternality, permanence, the quest for eternality, the quest for permanence, that is Sat. Then what is Chit? Chit means consciousness or knowledge. And Ananda means blissful. We are all seeking after Ananda. So the soul is, because you see, soul is actually Satchidananda. He is full of eternity, full of bliss, and full of knowledge, full of consciousness. But when the soul comes into this material world, he starts seeking after these three things: permanence, knowledge, and blissfulness. Actually, soul is full of all these three things. But when he comes into this material world, he starts searching for these three things. Because in the material world, matter means asat, achit, nirananda. There is no permanence, there is no consciousness or knowledge, and nirananda, there is no bliss in matter. And soul is identifying with matter. So now soul means Satchidananda. He is seeking after these three things in this material world. Sat, Chit, Ananda. Predominantly the soul is seeking Ananda or bliss. Now soul wants Ananda. Atma wants Ananda. Right? But as of now, the soul is identifying himself with these senses, mind, intelligence, this body, matter, material. The soul is identifying himself with material intelligence, material mind, material senses, material body, isn't it? So what is happening is, because the soul is identifying with the body, mind and intelligence, what is their purpose? Why mind and intelligence? What is their work? What is their purpose? The function of mind is to create thoughts which can give pleasure to the soul, Atma. Okay. Mind, the function of mind is to create thoughts which will give pleasure to the soul. Right? So the function of mind is to generate thoughts. So mind can generate any amount of thoughts. But the purpose of the mind is to give pleasure to the soul, Atma. The function of intelligence is to select which thought of the mind will give highest pleasure to the soul. And the senses are, that's why, driven by the mind to give pleasure to the soul, Atma. Because soul only wants Ananda, pleasure. We are all pleasure-seeking beings. So we want pleasure, and mind and intelligence, their function is to give pleasure to the soul. But the problem is that soul is identifying himself with the body. As soon as soul starts identifying himself with this material body or material nature, mind and intelligence become materially contaminated. That is called material mind and material intelligence. And they start thinking, the mind and intelligence, when they are materially contaminated, they start thinking that I have to give pleasure to, because they are materially contaminated, right? And soul is identifying with the body. So mind and intelligence, their function becomes, or they naturally function in a way so that they give pleasure to the body. You see, so mind and intelligence, they start functioning in such a way that they start giving pleasure to the body, because soul is identifying himself with the body, isn't it?
So soul thinks that I'm this body. So mind and intelligence, they'll give pleasure to the body. Right? So, and ultimately, the immediate counterpart of the soul is intelligence. So intelligence discriminates between spirit and matter. Only intelligence can do that. Right? So mode of passion means material mode. That is why intelligence, when if gets the material intelligence develops under mode of passion to create that sense of pleasure for the soul, because the soul will interact with the material world through mind and senses and intelligence. So intelligence gives that idea that this material pleasure is real pleasure, something like that, you know. So that is why material intelligence develops under mode of passion to create that idea of material pleasure. That idea of material pleasure is because of material intelligence, the contamination of intelligence, which is material in nature. So that is why this struggle for existence is because of material mode of passion. And that is why intelligence, all these senses, they are all products of mode of passion, because they create a sense of material pleasure for the soul, Atma. That is the whole system, how this material world is designed. You see how beautifully, how intelligently the Lord has designed. Now, why he has designed like that, we'll see in next few shlokas. So text 32, shloka number 32. Yadaite sangata bhava bhutendriya mano gunah yada yatana nirmane nashe kur brahma vittama. Yadaite sangata bhava bhutendriya mano gunah yada yatana nirmane nashe kur brahma vittama. Translation. O Narad, best of the transcendentalists, the forms of the body could not take place as long as these created parts, namely the elements, senses, mind, and the modes of nature, were assembled. You see, now the word assembly is used here, assembled. So, why assembled? So, that's what Brahmaji is telling you. See, yadi ete asangata bhava. Asangat. Sang means to come together. Right? So all these come together. The senses, the mind, intelligence, all these. They come together to form this body. That's what is told by Lord Brahma here. Bhuta Indriya Mano Guna. Bhuta Indriya, the senses. Man, Guna, the three modes. All these, they come together. The senses, the mind, intelligence, the three modes. Yada yatana nirmane. Yada ayatana nirmane. Nirmane means to create or to form. Na shekur brahma vittama. So all this was not possible without assembly. So all these come together and it is assembled. So assembled means, for example, when a car is manufactured, a car or any machine for that matter, any machine when it is manufactured, in the beginning, all the parts are separately created, isn't it? Silencer, steering wheel, the body parts, the external
you can say chassis, everything is created externally, right? It's not that car suddenly gets created. No, all the parts are created separately. The engine and everything. And then slowly they are assembled together to form a beautiful car that we see. Isn't it? In the beginning, everything is created separately and then they are assembled to form a car. This human body is created exactly like that. Right? So typically what happens in assembly of a car? So all the motor parts of the car are created and then they are all assembled. But still, will the car work? No. The car will move only when the driver sits in the car. Right? Although the car is assembled and car is standing in the showroom or in the factory, but till the driver enters the car will not move. Isn't it? So when the car is ready, when the car is assembled, then the driver sits in the car. Right? When the car is ready, then the driver sits in the car. In mother's womb also, when we are in the mother's womb, like that, same things happen like that only. You see, everything in this world is miracle. Everything in this world is a miracle. This whole world, everything is miracle. Just imagine, we enter the body of our mother through the body of our father. And then you see how assembly happens. Slowly, we are very small, shaped like a pea. And then slowly the holes develop, the whole body develops. And then we enter. Enter means we enter, but consciousness comes at a later stage. But here in the shloka, it is mentioned that like a car is assembled and the car moves when the driver comes into the car. Similarly, our body is created by all these elements coming together. But the body will move only when the soul enters the body. So now we are present within the body and that's why body starts moving. But we are not independent controllers. No. We are not independent controllers. As we discussed in our previous sessions also, that we have a small part of material ego. We have a small part of material intelligence. We have a small part of material mind. Right? And the sum total of all these elements combined together is called Mahat Tattva. Right? So the supreme intelligence, supreme mind, supreme everything, they are all controlled by whom? By Krishna, by Vishnu, Narayan. He is the original controller. That Krishna says in the Bhagavad Gita in the 9th chapter, Maya Adhyakshena Prakritihi Suyate Sacharacharam Hetu Nanena Konte Jagad Viparivartate. So he is the ultimate controller. And that is why we are always controlled. Always. People say, no, man proposes, God disposes. So we are always controlled, completely controlled. Because we have got just a fragment of the whole existence, a small fragment. But the whole existence is controlled by whom? The material ego, material intelligence, material everything. The sum total. That is all controlled by the Supreme Lord. Under his direction, everything is moving.
So our senses, our mind, our intelligence, our body, every part of the body is controlled by the Supreme Lord, by his arrangement. But although he is controlling everything, but like a loving father, he has given us little free will, little freedom to act. Like a loving father, he gives some toys to his son, some playing things to his son. Why? Because he loves the son. He wants to satisfy the son. So like that, the Lord has also given us a small freedom to act. If he wants, he can take away that freedom also. But that is the character, that is the nature of the Lord. He is a loving father. So he has given us that small freedom to act. And that small freedom because of that small freedom, we are able to construct these big, big buildings, big, big skyscrapers, aeroplanes, rockets, satellites. All this which we are able to construct, manipulating the energy of whom? Krishna. Energy belongs to Krishna only. But we are able to manipulate this energy. Why? Because we have been given that minute freedom to act. And using that minute freedom to act, we are doing all this what we are doing. But our freedom is minute. We cannot run this creation. We cannot run earth, sun, moon. No, that is done by Krishna only. We can do small, small things. On this earth, we can create a small skyscraper building. Right? We cannot control earth. We cannot control sun, moon, all these things. We can control small, small things. So we have got minute freedom given by Krishna. And this material energy is compared to the maid servant of the Lord, which is Durga Devi. So Durga Devi is the maid servant of Krishna. She is running this material energy, but under whose direction? That's what Krishna says in the Bhagavad Gita in the 9th chapter. All of you, you can comment which shloka, 9th chapter, which shloka. Maya adhyakshena prakritihi suyate sacharacharam hetu nanena kaunteya jagad viparivartate. Which shloka? Comment, please. So, Krishna is saying that under my direction, everything is going on. This material energy is working under my direction. The foolish people, those who don't have knowledge, those who don't have intelligence, they start thinking that material energy is the controller. But no, material energy cannot control. So the controller is Krishna, who is controlling this material energy. And under his control, this whole material existence comes into, it is set into motion by the Lord, the Supreme Lord. He is controlling everything. So now a very important announcement for all of you. Janmashtami is coming very soon. On 19th of August, 2022 is Janmashtami. So we'll have celebration here in the temple. But every year during Janmashtami, we conduct Diksha ceremony or initiation ceremony. So Diksha means initiation, beginning of spiritual life. Our first birth is through our material mother and father. Right? But our real birth, or you can say second birth, which is also called spiritual, because in this material world we are born through our material, we get body through mother and father. But re-spiritualization of our life happens by mercy of Guru and Krishna. Right? That is called re-spiritualization. So that is called rebirth. So our second birth happens by the mercy of Guru and Krishna, spiritual master and Krishna. So the formal process to accept
the shelter of Guru and Krishna is called Diksha or initiation. That is the beginning of spiritual life because you are born that day. Your second birth happens during initiation, during Diksha. So that Diksha ceremony will be having on the day of Janmashtami. And last year also we conducted. So many devotees, they took Ashray, many devotees, they took Diksha. So we'll have an Ashray ceremony. Ashray ceremony means those who are not able to follow all the instructions, those who are not chanting 16 rounds, they take Ashray, means taking shelter of Krishna or Guru. You accept Guru, you accept Krishna, but because you are not able to chant 16 rounds, initiation, Diksha will not happen. But Ashray, you will get Ashray of the Lord and Guru. And the second level, the higher level is Diksha. And those who are chanting 16 rounds, they can take Diksha, they can get initiated. So you get a new name, your spiritual name you will get. Like I got Adi Narayan Das as my second name, as my spiritual name. So you'll get a spiritual name and you'll get second birth on that day. So that initiation ceremony will happen on the day of Janmashtami in the morning. So we'll have a fire sacrifice, Havan, Narsimhadev Homa or Yagya here, Lord Narsimhadev. And in front of the deities, Lord Jagannath and Agni Dev, we accept the initiation or Diksha. So that will happen on 19th of August 2022, which is on Janmashtami day. So all of you, those who are chanting 16 rounds, or even if you are not chanting 16 rounds, I will send you the form today for Diksha. So you can fill the form and you can mention, all the details will be mentioned there. So you can select the details and you will receive a call from us in next 2-3 days and you'll be interviewed. A small interview will happen where you'll be asked that what is, how many rounds you are chanting and everything. And then if you are fit, if you are eligible, then you will be given initiation or Diksha. Those who will not be eligible, they will be given Ashray. So that will happen on 19th of August 2022. So very soon, today you will receive the link to fill the form, Google form, and then the ceremony will take place on 19th of August. So we'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा, इस अध्याय में हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद मुनि, ब्रह्मा जी और उनके पुत्र या हम कह सकते हैं उनके शिष्य नारद मुनि के बीच में संवाद चल रहा है और वो आपस में बात कर रहे हैं इस सृष्टि के रचना के बारे में। किस तरह से सृष्टि की रचना हुई, कैसे ये सारे जो सृष्टि के अंग हैं, भाग हैं, वो कैसे एक साथ आए, वो सारी चीजें हम इस अध्याय में देख रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत अध्याय है भागवत पुराण का। और हमने देखा अभी तक कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से, अपने पिता से पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, मैंने तो ये देखा है कि आप ही ऐसा प्रतीत होता है कि इस सृष्टि में आप के वश में सब कुछ है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप भी किसी की भक्ति करते हैं, आप भी किसी की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब आपसे भी परम कोई है, आपसे भी ऊपर कोई है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ नारद, मैं, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने सब चीज की रचना की है, लेकिन मेरे ऊपर भगवान नारायण है और मैं भी उन्हीं के द्वारा रचित हूं, मेरी रचना भी उन्होंने ही की है। और फिर हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमने देखा किस तरह से जो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है, जो ब्रह्म, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति से ये भौतिक आकाश का सृजन होता है या भौतिक आकाश उससे निकलता है। फिर भौतिक आकाश जो है उसमें तो ये जो भौतिक आकाश है इसमें जो जो विषय वस्तु है वो है ध्वनि। फिर उसके बाद भौतिक आकाश से क्या बनता है? तो भौतिक आकाश से बनता है हवा, वायु। और वायु जो है उसमें एक और विषय वस्तु आ जाती है, और वो कौन सी है? तो वो है स्पर्श। फिर उसके बाद वायु से बनती है अग्नि। अब अग्नि में एक और विषय वस्तु आ जाती है, और वो कौन सी है? रूप। ठीक है। उसके बाद अग्नि से क्या आता है? जल, यानी पानी। और पानी में एक और विषय वस्तु आ जाती है, और वो है रस, यानी स्वाद। और फिर जल से क्या बनता है? पृथ्वी, यानी जड़।
और उससे एक और विषय वस्तु आ जाती है, कौन सी? तो वो है, उसमें अंतिम जो पांचवी विषय वस्तु है वो आ जाती है, वो है महक, सुगंध। तो पृथ्वी के अंदर पांचों होते हैं, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। तो ये पांचों उसमें होते हैं। और फिर हमने देखा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारे एक साथ एकत्रित होते हैं और कैसे अब आगे हमारा शरीर रूप का रूप आता है और किस तरह से जीव शरीर धारण करता है, वो सब चीजें अब हम देखने वाले हैं। तो अब हम आज शुरू करेंगे अपनी चर्चा को 31वें श्लोक से। 31वां श्लोक। तेजसा तु विकुर्वाणाद् इंद्रयाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्रांग्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणाद् इंद्रयाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्रांग्रिपायवः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। By further transformation of the mode of passion, the sense organs like the ear, skin, nose, eyes, tongue, mouth, hands, genitals, legs, and the outlet for evacuating, together with intelligence and living energy, are all generated. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रजोगुण के और परिवर्तन से इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बुद्धि और प्राण के साथ सब कुछ का सृजन होता है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तेजसा तु विकुर्वाणाद् इंद्रियाणि दशा भवन। तेजसा, तेजसा का मतलब रजोगुण। विकुर्वाणाद्, विकुर्वाणाद् का मतलब उसके परिवर्तन से, उसके प्रभाव से। ज्ञान इंद्रियाणि दशा भवन, तो 10 इंद्रियों का सृजन होता है, 10 इंद्रियां प्रकट होती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं 10 इंद्रियां? हम तो 5 ही सोचते हैं, लेकिन 10 हैं। तो 10 कौन कौन सी हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मुख्यतः लोग ज्ञानेंद्रियों को सोचते हैं इंद्रियां हैं, लेकिन 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं जिससे हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, उन्हें ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। तो वो 5 हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिया हैं। इसी तरह से 5 कर्म इंद्रिया हैं। अब कौन कौन सी हैं कर्म इंद्रिया? 5। तो हाथ, पैर, बोलने की शक्ति, हमारा जिसे हम मल मूत्र विसर्जित करते हैं, वो दोनों अंग। तो इस तरह से ये 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। और फिर क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? कह रहे हैं इंद्रियाणि दशा भवन, तो ये 10 इंद्रियां प्रकट होती हैं रजोगुण के प्रभाव से। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो। तो ज्ञान शक्ति का मतलब होता है वही ज्ञान इंद्रिया, और क्रिया शक्ति मतलब कर्म इंद्रिया। बुद्धि प्राणश्च तेजसो, और इसके साथ साथ बुद्धि और प्राण यानी ये जो जीवन का जो भाव है वो, और बुद्धि यानी हमारा इंटेलिजेंस। श्रोत्रम त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर मेढ्रांग्रि पायवः। तो अब यहाँ पे ये 5 कर्म इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं कि ये सब प्रकट होते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखिए, तो इसीलिए
जो रजोगुण का प्रभाव है, उसके प्रभाव, ये 3 गुणों के प्रभाव से हमारे अंदर ये जो भावना है ना कि हम जीवित हैं, या मैं ये शरीर हूं, और शरीर को हम जीवित समझते हैं, क्योंकि शरीर तो मृत है ना, शरीर में जीवन थोड़ी है, जीवन तो जीवात्मा में है, शरीर के अंदर कोई जीवन नहीं है। तो ये जो भावना हमारे अंदर है कि शरीर के अंदर जीवन है, ये क्यों आता है, ये कहां से आता है? तो ये जो 3 गुणों का जो प्रभाव है, 3 गुण और काल जो हैं, जब ये हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम जीवित हैं, ये शरीर जीवित है। ठीक है। दूसरी चीज कि जीवात्मा का स्वभाव क्या है, जीवात्मा जो है उसे क्या कहते हैं? जीवात्मा को कहते हैं सत चित आनंद। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद विग्रह, कि वो सच्चिदानंद के स्रोत हैं, और हम सब चूंकि उनके अंश हैं तो हम भी सच्चिदानंद ही हैं। तो जो हम जीवित अपने आप को समझते हैं, तो सच्चिदानंद, चूंकि आत्मा सच्चिदानंद है, सत का मतलब होता है ये भाव होना कि मैं सनातन हूं, मैं शाश्वत रहना चाहता हूं, ये सत शक्ति से आता है आत्मा के। फिर चित्त शक्ति क्या होती है? चित्त मतलब ज्ञान या चेतना, ये चित्त शक्ति से आती है। और आनंद का मतलब हम सब आनंद चाहते हैं, आत्मा आनंद चाहती है, तो ये सच्चिदानंद विग्रह है जीवात्मा। जीवात्मा भी सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन वो तुच्छ, बहुत ही छोटा अणु, अणु सच्चिदानंद विग्रह है, और भगवान सागर सच्चिदानंद है। ठीक है। तो ये अंतर हमेशा, हम बूंद है, हमारे अंदर बूंद है, बूंद सच्चिदानंद है, और भगवान सागर सच्चिदानंद है। तो हम लोग अब इस भौतिक जगत में आते हैं, जब जीवात्मा अपनी पहचान इस शरीर, भौतिक शरीर से बना लेती है, तो हमें यह लगने लगता है कि हम ये शरीर है ना। और अब चूंकि ये जो जड़ जगत है, जड़ वस्तुओं में सच्चिदानंद है ही नहीं, जड़ वस्तुओं में कोई चेतना नहीं है, कोई शाश्वत भाव नहीं है, और आनंद भी नहीं है किसी भी जड़ वस्तु में। कोई भी जड़ वस्तु जो है वो असत, अचित और निरानंद है। मतलब उसमें न तो सत भाव है, यानी शाश्वत होने का भाव है, न उसके अंदर अचित यानी न चेतना है, यानी न ज्ञान है, और निरानंद, और उसमें कोई आनंद नहीं है। असत, अचित, निरानंद। तो इसीलिए अब यहां पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये सारी इंद्रियां एक साथ एकत्रित होती हैं, तो होता क्या है कि आत्मा, अब क्या सोचना शुरू कर दिया आत्मा ने? आत्मा क्या अपनी पहचान किससे बना लेती है? इस शरीर से। तो आत्मा ये कहती है कि मैं ये शरीर हूं। ठीक है। अब मन और बुद्धि, मन इंद्रियों को वश में रखता है और बुद्धि मन को वश में रखती। तो बुद्धि जो है वो आत्मा का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभिन्न अंग जैसा है, अभिन्न। तो मन क्या चाहता है? मन का क्या काम है? तो मन का काम है सोच पैदा करना। किस लिए? आत्मा को आनंद देने के लिए। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि, मन जो सोच पैदा करता है उसमें से कौन से सोच में आत्मा को सबसे अच्छा ज्यादा आनंद आएगा, वो बुद्धि तय करती कि आत्मा को सबसे अधिक आनंद किस में आएगा। क्योंकि आत्मा, शरीर में कोई सच्चिदानंद तो है नहीं,
इस जड़ वस्तु में सच्चिदानंद है नहीं, इसीलिए आत्मा खोजना शुरू कर देती है। भौतिक जगत में हम इसलिए आनंद की तलाश में आनंद खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद है ही नहीं। वास्तविक रूप में हम सब सच्चिदानंद से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में आते हैं, यहां पे सच्चिदानंद तो है ही नहीं कुछ, तो हम उसको खोजना शुरू कर देते, उसको हम सर्च करना शुरू कर देते। ठीक है, तो अब आत्मा का क्या भाव है कि मैं ये शरीर हूं। मन क्या करना, मन का क्या काम है? उसको आत्मा को आनंद देना है। ठीक है, मन का काम है आत्मा को आनंद देना। कैसे? तो वैसी सोच पैदा करके, क्योंकि उस सोच के आधार पे इंद्रियां काम करेंगी, और बुद्धि जो है वो तय करता है कि कैसे, किस सोच पे मैं काम करूं ताकि आत्मा को सबसे अधिक आनंद मिले। ठीक है, लेकिन आत्मा तो सोच रहा है, आत्मा ने तो अपने शरीर से पहचान बना ली है अपनी, इसलिए इसी को कहते हैं दूषित बुद्धि और दूषित मन। जब आत्मा इस शरीर से अपनी पहचान बना लेता है, जब आत्मा ये सोचने लगता है कि मैं ये शरीर हूं, तो मन और बुद्धि दूषित हो जाते हैं। तो मन और बुद्धि फिर आत्मा को आनंद नहीं देना चाहते, क्योंकि आत्मा तो सोच रही है मैं ये शरीर हूं, तो मन और बुद्धि शरीर को आनंद देना प्रारंभ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शरीर को आनंद देना ही आत्मा को आनंद देना है। ये सब दूषित होने से होता है। जब भौतिक जगत में हम आते हैं तो ये दूषित हो जाते हैं हम, और उसके बाद इस तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं। इसी को माया कहते हैं। तो ये वास्तविक आनंद तो है नहीं, हम झूठे आनंद के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो यहां पे अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो बुद्धि है वो भी सृजन, उसका भी सृजन होता है यहाँ पे। तो बुद्धि क्या है? वो आत्मा का बिल्कुल सबसे करीबी, आप कह सकते हैं सबसे जो समक्ष आत्मा के बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही हम इस जगत में रहते हैं और इस जगत से मुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के कारण ही हमारा इस जगत में वास होता है, और भौतिक जगत में वास का मुख्य कारण क्या है? रजोगुण। इसीलिए जो भौतिक बुद्धि हमारी बनी है, जड़ बुद्धि जो हमारी है, उसका कारण है रजोगुण का प्रभाव। तो इसीलिए रजोगुण से यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि बुद्धि जो है वो बनती है, और फिर वो और प्राण बनता है। तो प्राण क्या है? अब प्राण क्या है? तो प्राण वायु जो आत्मा को ढक लेती है ना। नहीं तो आत्मा इस शरीर के साथ पहचान बना ही नहीं पाएगी। तो वो आत्मा को जो ढक लेती है ना, प्राण वायु, उसके कारण होता है, वो एक आवरण बन जाता है। तो आत्मा जो है वो इस वजह से, बुद्धि चूंकि रजोगुण के प्रभाव से ये सब प्रकट हुआ है, इस वजह से आत्मा इस जड़ जगत में फंसी रहती है। और बुद्धि और प्राण, ये दो भी रजोगुण के ही इसलिए प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, या उसी के प्रभाव हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है उसका कोई लेना देना नहीं है इस जगत से, लेकिन जीवात्मा के अंदर वो भाव क्यों आता है? वो इसी कारण आता है कि बुद्धि जो है वो भौतिक जगत से फंसी हुई है। और ये इसका किस प्रभाव से ये आई है? तो रजोगुण के प्रभाव से। इस तरह से आत्मा जो है इस भौतिक जगत में फंसी रहती है। अब 32वां श्लोक। यदयते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यतन निर्माणे नशे कुरु ब्रह्म वित्तमा। यदयते संगता भावा,
भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यतन निर्माणे नशे कुरु ब्रह्म वित्तमा। ट्रांसलेशन अनुवाद। O Narad, best of the transcendentalists, the forms of the body could not take place as long as the created parts, namely the elements, senses, mind, and the modes of nature, were assembled. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं कि हे नारद, सबसे महान भक्त हो आप, तो ये जो शरीर का रूप है वो तब तक नहीं आता जब तक ये सारी जो हमने इंद्रियां और रूप देखा है इनको हम एकत्रित न करते। तो अब आप देखिए, यहां पे कह रहे हैं एकत्रित करना, इकट्ठा करना कह सकते हैं, या असेंबल करना कह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यद एते संगता असंगता भावा, असंग, संग का मतलब होता है मिल जाना, संगति हम कहते हैं ना। असंग का मतलब अलग रहना। तो भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, तो ये सारी इंद्रियां, मन और ये तीनों गुण, ये सब जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, यदा यतन निर्माणे, तब इस शरीर का निर्माण होता है। देखिए, निर्माणे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो शरीर का निर्माण होता है जब ये सारे सब जितने भी हमने अभी तक पढ़े विषय वस्तु और विषय, ये सब जब मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये असेंबली होती है, इस तरह से ये सारे एकत्रित होते हैं, इन्हें मिलाया जाता है। कौन मिलाता है? तो भगवान बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस पूरी प्रकृति तो भगवान की निगरानी में चल रही है। तो अब आप देखिए, यहां पे कह रहे हैं कि असेंबली होती है, या हम कह सकते हैं कि इनको मिलाया जाता है एक साथ। तो ये काफी हद तक हम इसकी तुलना, जैसे हमारी गाड़ी हम बनाते हैं ना, गाड़ी को जैसे हम एक साथ मिलाते हैं या उनको असेंबल करते हैं, उसी तरह से यहां भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निर्माण, आप देखिए निर्माण शब्द का प्रयोग किया गया, उसी तरह से ये सब का निर्माण होता है। तो अब जो हम गाड़ी को बनाते हैं या कार जो बनती है, कैसे बनती है? कोई कार होती है, कोई गाड़ी होती है, वो कैसे बनती है? तो पहले अलग अलग भाग को बनाया जाता है कि नहीं? किसी भी मोटर के जो पार्ट्स हैं, या मोटर पार्ट्स जो हम कहते हैं, या जो अलग अलग अंग हैं गाड़ी के, वो सब अलग अलग बनते हैं। साइलेंसर अलग बनता है, स्टीयरिंग व्हील अलग बनता है, सब कुछ अलग अलग बनता है कि नहीं? गाड़ी का शीशा अलग बनता है, गाड़ी का जो बाहरी जो शरीर है वो अलग बनता है, और फिर इन सबको हम एक जगह पे असेंबल करते हैं, मिला देते हैं एक जगह पे, इनको इकट्ठा करके इनको जब हम असेंबल कर देते हैं, यानी इनको जब हम एक विशेष तरीके से इनको जब हम जोड़ देते हैं, तो इन सब को जोड़ देने से क्या हो जाता है, कार बन जाती है, हमारी गाड़ी तैयार हो जाती है। ठीक है, ये सब को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, गाड़ी बन जाती है, कार बन जाती है। लेकिन कार तब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें
मनुष्य नहीं बैठेगा, ड्राइवर नहीं बैठेगा, है कि नहीं? भाई कार तो बना दिया आपने, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा कार चलेगी क्या? उसी तरह से हमारा शरीर, ये सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, इन सब के को मिलाने से, इन सबको जोड़ने से बनता है हमारा शरीर। लेकिन जब तक शरीर के अंदर हम प्रवेश नहीं करते, शरीर नहीं चलेगा। हमारे प्रवेश करने से शरीर चलता है। ठीक है? तो जब तक हम इस शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, शरीर नहीं चल सकता। तो ठीक है, अब शरीर के अंदर हम प्रवेश कर गए, शरीर चलने लगा, लेकिन शरीर का, हम तो चला रहे हैं शरीर को, लेकिन हम जो चलाते हैं शरीर को या इस भौतिक जगत को, ये बहुत ही तुच्छ, हम बिल्कुल बूंद जैसे हैं, तो हम बहुत ही छोटे हैं, अणु हैं, और भगवान विभु हैं। तो वास्तविक सब चीज किसके वश में है? हमें ऐसा लगता है कि शरीर हमारे वश में है, लेकिन शरीर को चला कौन रहा है? हमने पिछले सत्रों में देखा कि किस तरह से ये पूरे सृष्टि का एक सृष्टि की बुद्धि होती है, सृष्टि का मन होता है। तो ये क्या होता है? जो परमात्मा रूप में भगवान हैं, वो क्यों है? वो इसी के लिए तो है, क्योंकि वास्तविक रूप में वो ही चला रहे हैं सब कुछ। हमें ऐसा लगता है कि हम ये शरीर चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं चलाते। वो वास्तविक रूप में तो भगवान ही चलाते हैं। लेकिन चूंकि भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, तो पिता जो होता है वो अपने पुत्र से प्रेम के कारण, अब पिता जो होता है अपने पुत्र को स्वतंत्रता देता है थोड़ी सी। क्यों? ताकि पुत्र उससे प्रेम कर सके। स्वतंत्रता नहीं देगा तो प्रेम कैसे होगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान ने दी है। वैसे हम सब अणु हैं और भगवान विभु हैं, हम सब बूंद हैं और भगवान सागर हैं। गुण हम में और भगवान में वही है। तो जैसा हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ये जो पूरी प्रकृति है, जिसे हम दुर्गा देवी कहते हैं, इसे भगवान का दास बताया गया, भगवान का नौकर बताया गया है, सारे जितने भी देवी देवता हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, ऐसा लगता है कि हम इस शरीर को चला रहे हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाला वास्तविक रूप में तो भगवान है। ठीक है? लेकिन हमें, जैसा हमने चर्चा किया कि भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी स्वतंत्रता है हमारे अंदर। और इसीलिए ये पूरी सृष्टि का निर्माण तो भगवान ने किया, लेकिन हम भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं। जैसे इस पृथ्वी पे छोटा सा बिल्डिंग बना लें, छोटा सा हम अंतरिक्ष यान बना लें, वो हम बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, थोड़ी सी छोटी सी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो स्वतंत्रता दी गई है, इसी के कारण हम ये सृष्टि को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा वश में कर पाते हैं। क्योंकि एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो उसे स्वतंत्रता दे देता है ना? और कई बार पिता अपने पुत्र को खिलौने देता है, उसको खुश रखने के लिए, उसे प्रसन्न रखने के लिए। तो भगवान ने भी ऐसे ही हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, लेकिन छोटी स्वतंत्रता है, बहुत ही तुच्छ है, जिससे हम दुनिया नहीं चला सकते। पृथ्वी, आकाश, चंद्र, सूर्य, ये सब तो भगवान ही चला रही है, हम नहीं चला सकते, क्योंकि हम बहुत तुच्छ हैं, छोटे से हैं। लेकिन हम छोटी छोटी चीजें चला सकते हैं, जैसे गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, बिल्डिंगें बना सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस महत तत्व के कारण, यानी ये जो सारे जो सृष्टि की जो सृष्टि का जो अंग है,
इन सब को मिला के हमारा ये शरीर बना है। लेकिन वास्तविक जो ब्रह्मांड का जो अंग है वो भगवान भी उसको समाप्त करते हैं या उसको चलाते हैं। उसको चलाना या समाप्त करना वास्तविक रूप में भगवान करते हैं। हम छोटे रूप में छोटी छोटी चीजें चला या समाप्त कर सकते हैं। तो आप सबको लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब जन्माष्टमी आने वाली है, हम सब के लिए साल का सबसे बड़ा दिन। और हर साल जन्माष्टमी के दिन हम लोगों, हमारे जो शिष्य हैं, उन लोगों को जो शिष्य बनने लायक हैं उनको दीक्षा देते हैं। तो पिछले साल भी जन्माष्टमी के दिन कई सारे भक्तों ने दीक्षा लिया और आश्रय लिया। तो उसी तरह से इस बार भी जन्माष्टमी के दिन आश्रय और दीक्षा का जो प्रोग्राम है उसका जो उसका प्रोग्राम रहेगा। तो सुबह 8 बजे यज्ञ होता है, जो नरसिम्हदेव भगवान का यज्ञ होता है, हवन होता है, जिसमें अग्नि के आगे हम दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा क्या होता है? दीक्षा का मतलब होता है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होना। हमारा पहला जन्म जो होता है वो हमारे माता पिता से हमें ये शरीर मिला है। तो हमारे माता पिता के माध्यम से हमारा पहला जन्म होता है। लेकिन पहला जन्म तो जड़ जन्म है, ये जड़ शरीर मिलता है। लेकिन दूसरा जन्म हमें गुरु और भगवान की कृपा से मिलता है। तो दूसरा जन्म को ही दीक्षा कहते हैं। वो हमारा दूसरा जन्म है, यानी हम वापस से अब आध्यात्मिक जन्म हमारा, वापस से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो दूसरा इसलिए उसे दूसरा द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म। तो ये जो प्रोग्राम है ये जन्माष्टमी के दिन होगा। 19 तारीख को जन्माष्टमी है, तो सुबह ये दीक्षा का प्रोग्राम होगा। तो अभी हम थोड़ी देर में आप लोग को व्हाट्सएप पे इसका फॉर्म आ जाएगा, गूगल फॉर्म, आप लोग सब उसको भर सकते हैं। तो दीक्षा उनके लिए है जो लोग 16 माला का जप करते हैं, वो लोग दीक्षा ले सकते हैं। और आश्रय उनके लिए कि जो लोग 16 माला जप नहीं करते, जो सारे नियमावली पालन नहीं करते, लेकिन उन्हें गुरु और भगवान की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो वो लोग आश्रय लेते हैं। आश्रय का मतलब अब अगला आपका जो स्टेप है या अगला जो पड़ाव है वो दीक्षा का पड़ाव हो जाता है। वो दीक्षा के पहले की अवस्था है। तो वो लोग आश्रय लेते हैं और जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं उनको दीक्षा मिलता है। अब दीक्षा ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है, नहीं। तो आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें आप अपना डिटेल्स डालेंगे, अपनी अपनी जानकारी देंगे, तो उस आधार पे आपको कॉल आएगा। और अगर आप उस योग्य हैं तो आपको दीक्षा मिलेगा, उस योग्य अगर नहीं है तो फिर आपको आश्रय मिलेगा। तो ये जन्माष्टमी के दिन हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग वो फॉर्म भर सकते हैं और इस आधार पे आपको दीक्षा या आश्रय मिल सकता है। तो आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे, अगले सत्र में अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।